दिखा रहे हैं और चंडीगढ़ में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है जिसका दर्शक भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। ना किस लिए माता न जन्मेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। सबने चेयर ऐसे लगा ली। न जवानी भिक्षा, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा में, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को त्रास मिले न कभी, यूं पीठ दिखाकर आगे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मरती। सामने से एकदम बिल्कुल नीचे ही बैठ जाना, चेयर नीचे रख ले। The Me-17 is going to demonstrate the dousing of fire again, but this time it will fly much lower to show how it can easily fly at this height. The Me-17 is demonstrating how it would fly in case it is operating in large open areas with less obstructions. Helicopter is operating at almost 50 meters only. From this height, the speed of water is less, but impact over fire point is much more. Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान है। यह विमान युद्ध काल में बम, रॉकेट एवं गन पॉड सहित कुल 1500 किलो तक के विस्फोटकों को भी अपने साथ ले जा सकता है। इस विमान ने सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम इलाकों से लेकर विभिन्न मानव सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में इस विमान के द्वारा अपनी उपयोगिता को साबित किया है। इस विमान द्वारा शत्रु सीमा में अपने कमांडो को भी प्रवेश कराने का कार्य लिया जाता है तथा खतरनाक इलाकों में अपने सैनिकों को रसद सामग्री एवं हथियार पहुंचाने जैसे दुर्गम कार्यों को भी अंजाम दिया जाता है। The Indian Air Force over the years has rendered yeoman service in times of disasters. All available resources of the Indian Air Force have always responded to enormous challenges with speed, resolve and fortitude. In the past 1 year, flood relief and rescue operations have been undertaken in Uttarakhand, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir. The Devgarh ropeway rescue in Jharkhand was another feather in the Indian Air Force's cap. The Indian Air Force also joined the firefighting operations in Rajasthan and Himachal Pradesh.
Every day, the Indian Air Force undertakes numerous casualty evacuation missions in all types of terrain in various medical emergencies, stranding of tourists, and security situations. Carrying out Bambi bucket operations in an urban situation is a challenging task wherein the nitty-gritty of drop are very precise. Owing to high-rise buildings and towers around, the chances of collateral damage are high and it requires extreme precision and no room for error. Dousing the fire with a Bambi bucket is no mean task as the movement of the rotors of the aircraft cause the bucket to oscillate and make controlling the helicopter a challenge. दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में बड़े ही कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज सिर्फ बकेट कभी भी विमान का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसे पायलट को लगातार नियंत्रण में रखना होता है। इस प्रक्रिया में पानी के अलावा आग बुझाने वाला फायर रिटार्डेंट फोम भी भरा जा सकता है, जो कि आग को जल्दी से जल्दी बुझाने वाला एक रसायन है।
After dousing the fires in far-flung areas, the Mi-17 1B will now display its unique capability of inserting special forces into deep enemy territory, depicted here at Sukna Lake. As a simulation exercise, Mi-17 1B will drop a Gemini boat into Sukna Lake and provide assistance to our Special Forces commandos, who are already in another boat at the far end of Sukna Lake. Whether they will come from right or left, for that, you will have to wait and watch. दर्शकों, आज इस सुखना झील में हमारा Mi-17 1B हेलीकॉप्टर विमान एक खतरनाक अभियान का दृश्य उपस्थित करेगा, जिसमें इस झील के पास वह एक स्पीड बोट को उतार देगा, जिसमें सवार होकर हमारे कमांडो अपनी आगे की ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। Inducted in 2001, Mi-17 1B has flown extensively at the highest battlefield at Siachen Glacier. The helicopter is capable of carrying out armed special heliborne operations like small team insertion and extraction, helocasting and slithering of up to 36 combat troops in confined areas undetected at low levels near the enemy objectives. The helicopter is now flying at the nape of the earth and scanning for ground threats before insertion of the special forces. This entire activity which you are witnessing is called helocasting in military parlance. दर्शकों, अभी आपने हमारे हेलीकॉप्टर को एक चक्कर लगाकर वापस फिर से लौटते हुए देखा। अभी हमारे हेलीकॉप्टर ने पहले दुश्मन के पूरे इलाके की रेकी यानी कि छानबीन की एवं अब वह सही स्थान का चुनाव कर चुका है। अब विमान एक सुरक्षित स्थान पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। इस कार्रवाई में पायलट को आदेशों को सुनने के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखनी है और कमांडो के साथ संपर्क बनाए रखना है तथा अपने हेलीकॉप्टर को दुश्मन की रडार से भी बचाना है। After having inspected the lake for any enemy threats and flying very low avoiding the enemy radar, the helicopter gets ready to make an approach. And while the helicopter gets ready to make an approach, let me introduce you to today's team who are performing this daredevilry stunt. The captain of the aircraft is Wing Commander Irfan Wahid Khan Zarial, who is from the Queen of Hills, Shimla. An alumnus of National Defence Academy, he is commanding officer of 130 Helicopter Unit. Flying with him, his co-pilot is Coordinator Ankit Vashne. The Disiwala Munda has flown almost all the combat roles of Mi-17, including flying the mighty Himalayas at a young age. Chandigarh di Kudiyon, he is still a bachelor. दर्शकों,
इस कार्रवाई को हेलीकॉप्टिंग कहा जाता है और इस अभियान में आपने देखा कि हमारे हेलीकॉप्टर ने स्पीड बोट को दुश्मन की झील या नदी में नीचे गिरा दिया और हमारे कमांडो अब उस पर सवार होकर अपनी आगे की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से स्पीड बोट को नीचे उतारने के बाद कमांडो कितनी फुर्ती से आगे बढ़ रहे हैं। What you have witnessed is an amalgamation of robust engineering, dedicated training, supreme dexterity, absolute faith, and systematic coordination. The Special Forces boat is now headed towards for a quick retrieval. Our Special Forces troops are trained in combat search and rescue, destruction of enemy air defense, surveillance, and reconnaissance. And after they have retrieved the boat, you can see two Chinooks flying right in front of you in Beam 1 and Beam 2. दर्शकों, भारतीय वायुसेना में वर्ष 2019 में शामिल किया चिनूक हेलीकॉप्टर एक विशेष प्रकार का विमान है। यह विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर अपने बाकी हेलीकॉप्टरों से कुछ अधिक गुण को रखता है। अब आप देखेंगे इन दोनों हेलीकॉप्टरों की संयुक्त कार्रवाई और इन दोनों हेलीकॉप्टरों के विशेष गुण। This game-changing modern marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching operations, medical evacuation, airdrops, tactical insertion missions, and special heliborne operations. Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the cover of darkness. This capability is greatly enhanced by the state-of-art night vision devices. Night operational capability speaks volumes of the modern machine and the plethora. अल्ट्रा लो लेवल पर आता यह विमान दुश्मन की रडार से बच निकलने की काबिलियत को दिखा रहा है। अब विमान एक साथ संयुक्त कार्रवाई करेंगे। यह विमान की काबिलियत को दिखा रहा है। अब विमान एक साथ संयुक्त कार्रवाई करेंगे। यह विमान अधिकतम 54 सैनिकों को अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। 10 टन से अधिक भार वहन क्षमता एवं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस विमान को एक विशेष विमान बनाती है। The state of being stationary in air at a point in space is called hovering, and it is to be the most skilled task and requires a very high degree of precision and crew coordination. What you are seeing in front of you is Chinook has done a tailover maneuver. अब यह विमान एक ही स्थान पर रहकर 360 डिग्री घूमकर पुनः वापस आने की कार्रवाई को प्रदर्शित कर रहा है। दर्शकों, हवा में एक ही स्थान पर रुके रहने का नाम होवर है। इस समय दोनों विमान झील से बस 30 फीट की ऊंचाई पर ही हैं। Now
Now in front of us you can see the Chinook living up to their unit name of featherweight. You can see both the aircraft climbing up steeply and getting away as if it was nothing more than a featherweight. It is truly a marvel to see these giant machines being tamed by the skillful pilots. Airforce is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge. And now you can see both the Chinooks are facing each other to perform its next maneuver. दर्शकों, अभी आपने देखा कि दोनों विमान आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक से गति के साथ आते हैं और अचानक से रुक भी जाते हैं। ऐसी स्थिति को क्विक स्टॉप भी कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों ही विमान एक साथ बाएं और एक साथ दाएं की ओर आ जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस विमान का ये विशेष गुण किसी भी दुर्गम इलाके में इन विमानों को हेलीपैड पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर जहां पर उतरना चाहता है वह स्थान कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। Flying at these ultra low levels requires precise timing and coordination of all muscles of body and mind. And this is achieved by the aircrew through immense hard work and skill training. While it seems sweet to the eyes, ladies and gentlemen, do not try these stunts at home. While the aircraft gets ready to perform its next maneuver, let me introduce you to the crew. Team 1 has Wing Commander Dogra, Sada Apna Chandigarh da Puttar, who has studied from Army School Chandigarh and has extensive flying experience in J&K and Siachen Glacier. Along with him is Squadron Leader Thakur, who is a qualified flying instructor. JW Rivatra and LAC Charan are with them. In Beam 2 is Squadron Leader Amok Deshmukh. Colonel Amok Deshmukh has flown in many northeast places and he hails from Nagpur. Squadron Leader Surinder Singh Bhati has extensive flying experience in northeast hills as well. The seed of his flying dreams was shown here in the City Beautiful in Army School, Chandi Mandir. दर्शकों, आपने देखा था कि ये विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर न केवल आगे की ओर बल्कि ऊपर उठने के बाद पीछे की ओर से भी टेक ऑफ कर सकता है। दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हरा मेरा हर अंग है, शत्रु भी मुझसे दंग है, मेरे आगमन की आहट से वायु शांति भंग है, पल भर में मैं कर दूंगा शत्रु का काम तमाम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये देखिए, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। 2019 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसे शामिल किया गया था और ये 2 चिनूक हैं और 360 डिग्री एक ही जगह पर ये चिनूक घूम सकता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये लो लेवल पर, लोएस्ट लेवल पर जाकर एक सतह पर रुक सकता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में किसी भी तरह के ऑपरेशन या कार्रवाई को अंजाम देना हो तो ये चिनूक बड़ा ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा भारी भरकम सामान को एक दूसरी जगह पर पहुंचाने में भी ये चिनूक भारतीय वायुसेना के लिए काफी मददगार साबित होता है। और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, सुखना झील के ऊपर एक तरफ 35,000 लोगों की भीड़ है जो इन करतबों को देख रही है, तो दूसरी तरफ 90वां स्थापना दिवस है भारतीय वायुसेना का। और जैसा मैंने अभी आशुतोष आपको बताया था, 2019 में चिनूक को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। अमेरिकन मेड है। इसके अलावा यहाँ पर स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे जोश जश्न के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ जिस तरीके से करतब दिखाए जा रहे हैं, दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में अपना परचम मनवा सकती है। यानी कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें सुखना झील की भी दिखा देता हूँ। सुखना झील ये प्राकृतिक झील नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं एक नमूना है आर्किटेक्ट का कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई ये झील है और इस झील के ऊपर भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम दिखा रही है, अपने करतब दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। Now it's finally time to wake the Chinook goodbye. As you can see, the mighty Chinook has opened its ranks. I hope the hard work of the men behind these machines has left itself. Look at the crew who are not able to resist themselves from opening the ramp and waving humbly, wishing you a very happy Airforce Day. Once again, let's bid farewell to these magnificent machines and the mighty beam formation as it gets ready to make an exit right in front of you. देवियों एवं सज्जनों, हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय पधार चुके हैं।
Honorable Governor of Haryana, Shri Bandaru Dattatreya has arrived. हैंड में ही बढ़िया मिलता है, मैंने भी हैंड से आया, मैंने भी हैंड से किया। अब चीफ गेस्ट के बाद ही
ठीक है, कुछ देर बाद जैसे ही यहाँ पर वो पहुंचेंगे उससे पहले जो B-17 साथ में अटैक हेक्टर लाइट कॉम्बैट अब आई है प्रेसिडेंट कहाँ देंगे तो उसके बाद अलग अलग फॉर्मेट में रफाल मिराज 2000 जैगुआर MiG-29 अपग्रेडेड C-30 दिखाई देंगे और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी दिखाई देंगे। राष्ट्रपति इस समय जो सुप्रीम कमांडर हैं द्रौपदी मुर्मू वो पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ किसी भी वक्त में यहाँ पर फ्लाईपास्ट शुरू होगा जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस, शौर्य और कैपेबिलिटी का परिचय देता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना में 30 कॉम्बैट स्क्वाड्रन के तौर पर संख्या है और आने वाले 10 सालों में ये उम्मीद की जा रही है कि इजाफा होगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि पूरी तरीके से भारत में निर्मित है वो जहाँ MiG-21 को अगले 3 से 4 सालों में उसे रिप्लेस करेगा तो वहीं मार्क 2 की भी उम्मीद की जा रही है कि मार्क 2 का 8 से 9 साल के अंदर मिराज जैगुआर और MiG-29 अपग्रेड जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बदलेगा और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना इस समय ट्रांसफॉर्मेशन और अपग्रेडेशन साइबर वॉरफेयर से लेकर आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि अब हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पधार चुकी हैं, जिनका स्वागत वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कर रहे हैं। We also have amongst us Honorable Governor of Punjab and the Administrator of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohit, and Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. राष्ट्रपति महोदया के मंच पर आगमन के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा, अतः आपसे अनुरोध है कि आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, ठीक है।
राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अब राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। That's an inside view of the Mi-17 V5 helicopters. That's the ensign formation. The ensign formation carrying the national flag and the Airforce ensigns. What a beautiful aerial view, pre-recorded before they arrive onto the main venue where the audience is being seated today. भारतीय वायुसेना नवीनतम हथियारों, लड़ाकू विमानों से दक्ष है। ये किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है ताकि देश पर कोई आंच न आए। That's the first formation, the ensign formation, trooping the national flag and ensigns of the Indian Air Force. The formation is being flown by 152 helicopter unit, also known as the Mighty Armor. The formation led by Wing Commander Vishal Jain. Flying from your left is the Prachand formation comprising the indigenously developed light combat helicopter. This is the latest addition in the arsenal of Indian Air Force, inducted on 3rd October 2022. Look to the skies, you will see 3 light combat helicopters flying in big formation, led by Group Captain Deepak Vishnoi. Right of formation leader is Wing Commander Saurabh and left is Squadron Leader Sachin. Coming in with a thunder, you will now see our very own light combat aircraft Tejas in the sky.
Tejas is a new generation multi-role aircraft capable of carrying the state-of-the-art air-to-air and air-to-ground weapon system. Group Captain Dinesh Kumar Dhankar will be piercing the blue skies of Chandigarh above Sukna today and fly high into the sky. Tejas is a single-engine, highly agile, multi-role, supersonic fighter aircraft designed and developed by India's aerospace company Hindustan Aeronautics Limited. The fighter jet has a quadriplex digital fly-by-wire flight control system along with associated advanced flight control leads. And there, up in the sky, is the light combat aircraft Tejas. It is now time for one of our oldest aircraft to take to the skies. The Howard aircraft is a part of our heritage flight and depicts Indian Air Force's journey over the past 90 years. Please welcome the vintage beauty of the Indian Air Force, the Howard aircraft in bright yellow. The Howard you see today is being flown by Wing Commander Amit Hopankar and Wing Commander Anand Kumar Singh. They both are qualified flying instructors in the Indian Air Force. The aircraft, painted in bright yellow, signifies its training role. The Howard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly Hurricanes and Spitfires. The aircraft was decommissioned in 1989 and became a part of the Heritage Flight family in 2015 after restoration. Since 2015, after restoration, it has participated in Air Force Day Parade flypast at Hindon near New Delhi and today at this beautiful city of Chandigarh. With the determination and technical expertise of the Indian Air Force's maintenance crew, these vintage flying machines will continue to fly and inspire future generation of aviators and engineers. Let's give a huge round of applause
for the heritage flight as the Harvard waggles its wings and pays a salute to the chief guest. दर्शकों, अब आपके बाईं ओर से आ रहे हैं हमारे दो चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय थल सेना की 105 मिलीमीटर कैलिबर की तोप को अपने साथ ला रहे हैं। युद्ध के मैदान में यह हेलीकॉप्टर हमारी तोपों का लगातार स्थान बदलता रहता है, जिससे शत्रु को हमारी तोप की सही स्थिति का कभी पता ही नहीं चल पाता। दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी यह तोपों को पहुंचाते रहते हैं। और अब आपके बाईं ओर से आ चुके हैं चिनूक फॉर्मेशन में। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आदित्य प्रताप सिंह। उनके साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर गणेश, स्क्वाड्रन लीडर कन्हैया और स्क्वाड्रन लीडर पारुल। Moving on from the rotary wing airlift to the rotary wing offensive power of the Indian Air Force. Eklavya, arrowhead formation, led by Mi-35 attack helicopter, flanked by the Apache and indigenous ALH Mark IV Rudra helicopters. The formation in Mi-35 is going to be led by Wing Commander Kapil Rajput. Apache 1 and 2 are led by Wing Commander Munir Dogra and Squadron Leader Sagar Bish. Eklavya 4 and 5, ALH Mark IV are led by Wing Commander R.K. Mishra and Wing Commander R. Vishnu. Keep looking to your left as soon the Eklavya formation will fly by. Attack helicopters are also known as the flying tanks. Thanks to the heavy armor, plating and phenomenal firepower, they are meant primarily for close ground support to the troops in the thick of the battle. Keeping up with the ethos of the Indian Air Force, we take pride in our heritage. So we present to you the Goonie bird, savior of Kashmir, the one and only Dakota aircraft, which was at the forefront of operations since its induction in 1947 through the various wars right up to 1971. जिनकी पगरज लेकर मैंने आगे बढ़ना सीखा था, उनके सूत्र उठाकर मैंने युद्धों में लड़ना सीखा था. Look to your left. The Dakota aircraft is being flown by Wing Commander Siddharth Gehlot and Wing Commander Deepak Dhankar. दर्शकों, अब आपके सामने है डेकोटा DC-3 विमान, जो कि वर्ष 1944 में निर्मित हुआ था. इस विमान का भारतीय नाम परशुराम है, जिनको उनकी शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाना जाता है. यह हमारी वायुसेना की परंपरा और संस्कार का ही परिणाम है कि इतने वर्षों से हमने अपनी इस विरासत को उड़ान के योग्य बनाकर रखा है. आज वर्ष 2022 में गर्व से आसमान में उड़ता यह विमान अपनी गौरव गाथा को एक बार फिर से दोहरा रहा है. The Dakota is remembered by the pilot veterans as one of the finest and most forgiving aircraft in the world and has played a sterling role in the history of the Indian Air Force. Through the many decades it served, it remained indispensable in the task of air logistics and transportation. The aircraft had a stellar role to play
during the famous Budgam landings to move troops to Kashmir in October 1947. The aircraft was also used in the famous Sangel drop during liberation of Bangladesh in 1971. Coming in next from Sada Apna Chandigarh Airforce Station, Big Boys, the Gabroos. The formation is led by IL-76, captained by Wing Commander Jai Singh. Captain flying in the left AN-32 is Wing Commander Sailesh Kumar Singh, and on the right AN-32 is Wing Commander Muhammad Hafizullah. The formation will bring forefront the workhorses of the tactical and strategic lift power of the Indian Air Force. So keep looking to your left for the big boy. Any forward area from Ladakh to Arunachal to Andaman and Nicobar is kept well stocked and supplied by the AN-32s, while the IL-76 is used for rapid induction of troops as seen during the Eastern Ladakh conflict. And there, ladies and gentlemen, our Gabroos have come, the big boy formation. Flying in next will be the Vajrang formation with one C-130J Super Hercules along with 4 Sukhoi 30 MKI in escort role. The captain of C-130J is Wing Commander Rahul Rawat, and the Sukhois are being led by Group Captain Amit Rai Tamta. The C-130J is the face of a modernized and capable transport arm of the Indian Air Force. With the integration of the Astra and BrahMos, the Sukhoi 30s are one of the most lethal fighter aircraft. Ladies and gentlemen, coming from your left, the Vajrang formation. In the sky, you will next see the Embraer jet mounted with radars. Our eye in the sky. This high-value aerial asset never ventures out into the battle alone. It brings with itself dedicated fire escorts to shoot down any potential threats. Today, it will be flanked by Sukhoi 30 MKIs and MiG-29s. Netra formation today is being led by Group Captain S. Gunasekaran. Leading the Sukhoi 30s is Group Captain Sachin Arora, and the leader of MiG-29s is Wing Commander Kaustubh Sharma. Flying in, Netra formation.
piercing the cloudy skies today will be MiG-21 Bison 29 flying in Badal formation. MiG played a vital role in Operation Safed Sagar during the Kargil War. MiG-21 aircraft is an mixed air and air-to-ground weapons. The upgrade thrust to weight near vertical ascent. It is a formidable dogfighter and is classified as air. Wing command and is in Group Captain F.L. Roy is leading the MiG-21 Bisons and Wing Commander Manish Sharma is in lead of the MiG-29s. The Badal formation. Flying in next will be the Jaguar fighter aircraft. Jaguar विमान मुख्यतः बम वर्षक विमान के रूप में जाना जाता है, जो शत्रु की सीमा में अंदर तक घुसकर शत्रुओं के ठिकाने तबाह करने में सक्षम है। इसके साथ ही यह हवाई फोटोग्राफी द्वारा दुश्मन के इलाके की हर तस्वीर को लेने में सक्षम है। Shamsher formation today is being led by Group Captain Nagendra Abhishek. As a force keen to transform into the future, the Indian Air Force has upgraded its Mirage 2000 fleet and recently added Rafale to its inventory. You will now see these two fighter aircraft flying in Vajra formation. Leading the Mirages is Group Captain C.P. Deshpande and leader of Rafales is Wing Commander H. Vivek. The MiG-2000 struck terror in the hearts of our adversaries when it deployed the terrorist camps at Balakot and destroyed them. The Vajra formation. The next formation is called the Missing Man formation to pay homage to the brave warriors who made the supreme sacrifice for their motherland. As they fly in, you will notice that the second aircraft Tejas in front of you will detach upwards and execute a roll off the top maneuver to symbolize the missing man while his comrades continue home. Flying in this formation are Group Captain M.K. Singh along with Wing Commander Arun Bhoj, Wing Commander R. Rai and Wing Commander Karni Singh Rathore. Today, this formation is named Sekho in honor of Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekho,
the only Paramveer Chakra recipient of the Indian Air Force who displayed undaunted courage under fire during the 1971 war. Flying in this formation were Rafale, Mirage 2000, Tejas and Jaguar. Flying in next is the Trishul formation comprising Sukhoi 30s led by Group Captain Ashish Dhankar. The formation will carry out a Trishul maneuver right in front of you with two wingmen walling outwards in an upward climbing maneuver, and the leader at the center will climb straight up into the blue yonder. Flying in front of you, the Trishul formation. Lo and behold, you now have a Trishul in the sky. The Trishul symbolizes the synergy between the tri-services. Flying in next will be a C-17 along with the Hawks of Surya Kiran aerobatic team. The captain of C-17 is Group Captain A.K. Patnaik, and leading the Surya Kirans is Group Captain G.S. Dillon. Look behind your left shoulder to catch a glimpse of this formation, taking a curved path as they graciously turn in front of you. You will now witness the mammoth transport aircraft C-130J Super Hercules flying in again, but this time from the front. Captain of C-130J today is Wing Commander Rahul Rawat. The C-130J Super Hercules has tremendous tactical airlift capability and also reaches out for aid during humanitarian assistance and disaster relief operations. This aircraft can also be used for para-dropping special forces behind enemy lines in hostile airspace. You are now witnessing bright flares being dispensed from the aircraft. During hostilities, these flares are used by military aircraft to deceive heat-seeking missiles of the enemies. आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध हुआ था, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। उसी कुरुक्षेत्र के उत्तरी किनारे पर आधुनिक तरह से बनाया गया शहर चंडीगढ़ है, जो उस महायुद्ध का दर्शक रहा है। महाभारत के समय चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिर्फ अभिमन्यु को थी, पर आज सामने बिछे दुश्मन के चक्रव्यूह को तोड़ने की कला भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में भी है। In the next formation, you will notice how the three fighters of the Indian Air Force, Tejas as Nakul, Sukhoi 30 as Karn, and Rafale as Arjun, will carry out maneuvers and enter-exit the Chakraview in a well-coordinated, rehearsed manner in quick succession, demonstrating the combat capabilities of the Indian Air Force. The LCA Tejas that shall soon be approaching from your right today is flown by Wing Commander Kartikeya Singh. With the induction of Tejas, the Indian
has been exposed after their hijab has fallen until action is taken on this minister, Mr. Arvind Kejriwal can't distance himself. एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं का तो अपमान किया ही है, बल्कि समाज के अंदर भी नफरत फैलाने का काम किया है, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और ये बात सही है, ढकोसला नहीं है, तो आप उनको As the Tejas exits, get set for the high-speed run. The Rafale will fly in from your left at a speed in excess of 1,130 kilometers per hour, which is just 10% short of the speed of sound. And there the high-speed run. The Rafale now exits, once again making way for our own Tejas. The Tejas has a tailless delta platform designed to keep aircraft small and lightweight, and there it pulls up, showing off its curves and delta platform. आकाश में आपको आवाज सुनाई दे रही है और ठीक मेरे पीछे शायद आपको दिखाई दे रहा है कोई है, और यहाँ पर इतने करतब दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के करतब देखकर शायद पूरा चंडीगढ़ कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के साथ साथ पूरा मुझे ये प्लेन गुजर रहा है और यहाँ पर ये फाइटर प्लेन्स हैं जो लगातार करतब दिखा रहे हैं सुखना लेक और इस पानी के लेवल तक फाइटर जेट टच कर चुके हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत नजारा है और ये नजारा है भारत की उस ताकत का ऑडियो चेक अब देखिए ऑडियो चेक 1 2 3 अब मिल रही है Yet another surprise for you. Flying in once ऑडियो again चेक 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 for the next maneuver, the inverted flight. ऑडियो चेक 1 2 3 The pilot will fly inverted all along the Sukhna ऑडियो नहीं आ रहा है। Look to your right as the aircraft will fly in inverted. पीछे जहाज एम्बियंस माइक बंद कर दो बंद And there it inverts, the pilot literally hanging to his seat straps. ऑडियो चेक 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 The aircraft rolls over and ऑडियो flies ये out पीछे a back straight turn to the right. आवाज सुन ही नहीं सकते आप, पीछे इतनी आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज है। एम्बियंस माइक उसने बंद कर रखा है, गन माइक ही ऑन है, लेकिन पीछे Notice as it goes over the top, back down and stops. And prepares to carry out a high G barrel roll to the left. तो मैं देख पा रहा हूँ दरअसल ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है और ये तस्वीर कहती है भारत दुनिया में सर्वशक्तिमान
राष्ट्र बन चुका है। जिस तरीके से वायुसेना की शक्ति लगातार यहाँ पर करतब दिखा रही है, जिस तरीके से भारत में निर्मित स्वदेशी प्लेन हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार करतब दिखा रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो यान है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, वो यहाँ पर लगातार करतब दिखा रहे हैं। उन्हें देखकर कहीं ना कहीं हर एक भारतीय का सीना गर्व और जोश के साथ चौड़ा हो रहा है। सुखना झील पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए एक प्लेन जाता है, उसके तुरंत बाद दूसरा आ जाता है। पिछली बार जब आपने मेरे से सिर्फ सवाल पूछा था, महज इतने में ही एक फाइटर गुजर गया था। और ये देखिए यहाँ पर रफाल, जगुआर, मिग, सुखोई, हर तरह के प्लेन यहाँ पर अपने करतब दिखा रहे हैं। और शायद साउंड इतनी है कि मैं अपने कानों में से ये निकाल दूं तो मुझे शायद आपका सवाल भी नहीं सुन पाएगा। और यहाँ पर शोर जो है, ये जो ध्वनि है, ये कहीं ना कहीं खून के उबाल को बढ़ा देती है, शरीर के करतब यहाँ पर लगातार। क्या आपने किसी लड़ाकू विमान को रिवर्स गियर में देखा है? Have you ever seen a fighter aircraft in reverse gear? Well, this is your chance to do so in the final maneuver. Notice as the aircraft pulls up into the sky, the pilot has made it stand on its tail and slow down the aircraft to zero speed. And it starts sliding down, executing the tail slide maneuver. यहाँ पर मौजूद हैं एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी ने ही महामहिम सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया था। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि आशुतोष एक नई परंपरा भी आज के दिन से शुरुआत हुई है, और वो परंपरा ये है कि अब से पहले जो एयर शो सिर्फ NCR या फिर देश की राजधानी के आसपास होते थे, वो अब पूरे देश में जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई है। 90वां स्थापना दिवस है एयरफोर्स का, और पहला जो बाहर एयर शो राजधानी के बाहर हो रहा है वो चंडीगढ़ में हो रहा है। और इसके बाद हर साल ये एयर शो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में होते रहेंगे। और आज ही भारतीय वायुसेना को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी मिली है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो एयरफोर्स के लिए तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और देशवासियों के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। और एक नई ताकत, एक नया जोश, एक नया जश्न और एक नए भारत की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए ठीक मेरे पीछे There you see the outermost aircraft now changing their positions to give a diamond in the sky. Outermost aircraft now changing their positions to give a diamond in the sky. छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है, बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। टीम का नेतृत्व करते हुए सूर्य किरण 1 की पोजीशन में उड़ान भर रहे हैं हमारे कमान अधिकारी जो कि पंजाब से हैं, और उनके ठीक पीछे उड़ान भर रहे हैं सूर्य किरण 4 विंग कमांडर अतुल, जिनके पीछे है स्क्वाड्रन लीडर भल्ला हमारे सूर्य किरण 7। Soon now the leader is going to give a change in the formation, and let's hear out for his call now. There you see them now taking the shape of the light combat aircraft Tejas, proudly made in India by Hindustan Aeronautics Limited, and now approaching from your left. Let me inform you that Surya Kiran's 1, 4 and 7 form the spine of formations, whereas the even numbers of 2, 6 and 8, that is Squad Leader Garg, Wing Commander Alok and Squad Leader Himanshu form the right wing, and the odd numbers 3, 5 and 9
or Squad Leader Bharadwaj, Wing Commander Bordaloy, and Squad Leader Salaria form the left one. There you see the team's reaction now, changing the formation to Vulcan. And if you continue to look straight ahead, you will notice a change in the formation with number 7 peeling away. The rest of the team has taken the shape of a rota dedicated to the recent most addition in the Indian Air Force inventory, the indigenous light combat helicopter Prachand, and is approaching from your left. Let me tell you that the team trains for 6 months, day in and out, and showcases the capabilities of the Indian Air Force for the rest of the 6, while also motivating the youth to join the esteemed defense services. With that, please look to your left, as coming in soon is Suryakiran 7, who had earlier peeled away from the formation. Suryakiran 7, that is Squadron Leader Manik Bhalla, is a Chandigarh boy, and Darren Butt now do wave at him as he waves back at you. The team will now be executing an 8-aircraft quarter clover. A quarter clover is like a loop, except that during the maneuver, the formation will change its direction by 90 degrees. So soon you will see them entering the arena from your right. However, they will be exiting 12 o'clock to you. And there they come and they pitch up. Let's hear out for the leader's call. And there you see the team's reaction now change its direction by 90 degrees to exit straight ahead of you. This 26-year young team has performed in 72 cities across the length and breadth of the nation, while also leaving a global imprint in countries like Laos, Singapore, Myanmar, China, Sri Lanka and UAE. इसी के साथ अपनी दाहिनी ओर देखते रहे, क्योंकि वो आ रहे हैं सूर्यकिरण 7 आपको हॉक एयरक्राफ्ट का 360 व्यू दिखाने। Approaching soon from your left, the team is now ready for a barrel roll. Suryakirans will be making a forward-moving spiral in the skies without changing their diamond formation. They are at a distance of mere 5 meters away from each other. This diamond coming from your left is dedicated to all the beautiful ladies here witnessing this display. As they position for their next maneuver, let me inform you that all pilots of the team are from various fighter fleets of the Indian Air Force, like the Mirages, the Sukhois, the MiGs, and the Jaguars.
number 7 buzzing through the skies to carry out a roll off the top. नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पट सजा है, बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आप सूर्य किरण टीम को अपने ठीक सामने से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पाएंगे। Approaching from straight ahead is the team now for a crossover break. There you see the team now peeling to the skies with Surya Kiran 1, 4 and 7 taking to the skies, signifying the Indian Air Force's motto, touch the sky with glory. Glossy bright aircraft that you see in the skies today are the Hawk Mark 132, an advanced jet trainer licensed manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited. They are kept ready to fly by our maintenance team led by Wing Commander Rana, Wing Commander Negi, Squadron Leader Dhayal and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar. Next, allow me to take you on a journey where we are bringing the thrill lower and closer to you. Earlier we were flying at 500 feet, but now we will dazzle you by flying at heights of mere 100 feet above the ground and at crossing speeds in excess of 1500 kilometers per hour. Coming in for a barbed wire cross are Surya Kirans 8 and 6 from your left and Surya Kirans 9 and 5 from your right. Is the synchro pair for a jinking cross. In this maneuver, both 8 and 9 will cross each other at treetop height, showcasing agility and coordination. Ladies and gentlemen, please look to your left and to your right. Coming in from your right will be 5 aircraft in an arrowhead formation, making the alphabet A. Please look to your right as they approach. And here comes number 5 from the left to cross through the alpha. On top of the cake, as the temperatures in this arena so. Coming in from your right are Surya Kiran 6, 8 and 9.
In this maneuver, they will be rolling synchronously to my tune like ballerinas in this well choreographed maneuver. Please look to your right as they approach. Here they go in 3, 2, and 1. Advancing from your right are Suryakirans 1, 4, and 7, with Suryakirans 2 and 3 ready to draw circles around them. In this maneuver, you will see the theme resembling the shape of a DNA. And in our DNA, we saw the theme's motto of Sadaiv Sarvottam, or always the best. There goes number 3 now, followed by number 2. Number 2, that is squad leader Garg, also hails from Chandigarh and has commenced his role. The team carried out various displays all over the country to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, or 7th of Indian independence. And this year we performed at Bhubaneswar, Puri and Guwahati towards these celebrations. That is number 5 with a thunderous roar buzzing through the skies and surprising the audience. After that jolting maneuver, we request you to look to your far right. Coming in are Suryakirans 6, 8 and 9 for an inverted wing. And there inverts number 9 now with 6 and 8 flying level and straight, escorting the inverted man. The next maneuver is a very graceful sight for the viewers, but an extremely exciting one for the pilots, the rollbacks. On your right, the aircraft are coming in a shockwave formation. On the leader's command, the inner members will roll out to replace the outers. There you see now 4 and 7 rolling out. बचपन में हम सब ने पकड़ा पकड़ाई, खो खो, कबड्डी तो जरूर ही खेली होगी। तो अब आपके लिए ला रहे हैं सूर्यकिरण टीम से कुछ खास। सूर्यकिरण टीम की अपनी एक छोटी सी लुक्का छुपी। आपके ठीक सामने से अब आप एक जहाज को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। अगर आप एक जहाज देख पा रहे हैं तो एक हाथ उठाएं, और अगर आप 2 जहाज देख पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथ उठाएं। From
to your left and right now. The synchro pair is making an entrance for a 1+1 turning cross. They both will be maintaining the same pitch and rate and will first perform a cross close to us and then replicate the same cross a little further away. Ladies and gentlemen, Suryakiras 1, 2, 3, 4 and 7 are now approaching from your right for a quarter clover burst, and soon you will be able to see them and hear them in the air. There they split and dispersed, staying true to our name and enveloping the skies like the rays of the sun, the Suryakiran. With the induction of Tejas, the Indian aerospace industry in general and the Indian Air Force in particular look to your right as the aircraft carries out the hesitation rolls. The aircraft pitches up into the lovely skies of Chandigarh. This maneuver is carried out to shoot down the adversary as it allows for a rapid change of direction for an optimum weapon delivery. The pilot now spots an adversary and turns like a beast, carrying out the max straight turn. The pilot is now positioning for the signature maneuver, the red-eye turn, where the aircraft is subjected to -3.5 G. इसमें विमान अपसाइड डाउन होकर उल्टा होकर टर्न करेगा, जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से आंखों में खून का बहाव इतना ज्यादा हो जाता है कि पायलट की आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। Ladies and gentlemen, the red-eye turn. As the Tejas exits, we have the majestic Rafale and a Su-30 entering the Chakravyuh from your right as a part of the Transformer package. The Rafale today is being flown by Group Captain Abhishek Tripathi and the Sukhoi 30 is flown by Wing Commander Abhinav Sen. As they carry out the slow speed run, do notice how gracefully they glide past you at a speed which is as slow as that of a helicopter. Horizontal figure of 8 in the sky.
courageous exits, get set for the high-speed run. The Rafale will fly in from your left at a speed in excess of 1,130 kilometers per hour, which is just 10% short of the speed of sound. And there the high-speed run. The Rafale now exits, once again making way for our own Tejas. The Tejas has a tailless delta platform designed to keep the aircraft small and lightweight, and there it pulls up, showing off its curve. The team is maintaining the one-glass formation on this 90th Airforce Day. The team comprises 4 members who go by call signs of Sarang 1, 2, 3 and 4, with Sarang 1 as the team leader of the formation, flown by the commanding officer, Wing Commander Girish Komar, Vayu Sena Medal. With a decade-plus experience as a display pilot, he has been one of the pioneers of Sarang team in making it one of its kind in the world. The other aircraft are captained by Wing Commander Sridhar, Wing Commander Veer Kumar and Wing Commander Gopi Krishna. स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा स्वदेशी रक्षा उत्पादन शक्ति के विकास और क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है। And the next formation is a dedication to indigenization and of course to our motherland, making the English letter I in the sky. Coming from your right, Sarangs in India formation. For the next maneuver, let me introduce you to the co-pilots of today. In Sarang 1, with team leader is Squadron Leader Akash. In Sarang 2, we have Squadron Leader Dhanveer Singh. Wing Commander Patnaik is the co-pilot of Sarang 3 and Wing Commander Niket Tiwari is in Sarang 4 as co-pilot. These highly skilled pilots leave no opportunity to show off the capabilities of the helicopter they fly. Indeed, a fine product of Indian aviation industry and a symbol of Make in India. Ladies and gentlemen, Sarang is also available on social media platforms. You can follow us on Instagram and Twitter handles as Sarang_IAF. Now, keep looking at the aircraft approaching from your left. On the leader's command, the formation will change to diamond. An aerial diamond marking the occasion of Airforce Day, this time from your left, ladies and gentlemen. Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise. And here goes number 4, pulling up for the stall turn. The aircraft will join us soon after a short break. Now, as we look slightly to the right, Sarang 1, 2 and 3 are positioning for the team's signature maneuver, the Dolphins Leap. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. This maneuver is demanding and a demonstration of the flying skill of this fantastic team. All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left.
So ladies and gentlemen, look straight ahead for Dolphins